Hi everyone, my name is Rosie Bansal. I'm a fitness enthusiast. With me today is Dr. Nitin Menon. Hi Doctor. Dr. Menon is a lead consultant, physical medicine and rehabilitation at Apollo Hospitals, Navi Mumbai. Thank you for joining us today, Doctor. Doctor, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, rehabilitation होता क्या है? Rehabilitation is something which is done to make the person function better. Okay. Now, function एक ऐसी चीज होती है जो not many people know. हार्ट की बीमारी, पेट की बीमारी, सर की बीमारी सबको पता होता है, right. लेकिन ये नहीं पता होता कि फंक्शन क्या होता है. फंक्शन ये होता है कि एक आदमी अगर एक चीज करना चाहे, फॉर एग्जांपल 10 मीटर चलना चाहे, अपने बाथरूम में को यूज करना चाहे, अपने कपड़े को पहनना चाहे, दिस इज अ फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. अ ह्यूमन बीइंग वांट्स टू गो टू वर्क. Suppose he wants to run 10 kilometer race. Whatever he wants to do, that is a function. And if you want to improve your function or get a function, जैसे आपको कभी पैरालिसिस हो गया और आपका हाथ पैर चल नहीं रहा है, उससे आपको आगे बढ़ना है, आपको हाथ पैर चलाना है या उसके साथ कैसे जीना है ये सीखना है, तो आपको आपके फंक्शन को इम्प्रूव करना है. तो एनीथिंग व्हिच इम्प्रूव्स फंक्शन इज वेयर रिहैबिलिटेशन वर्क्स. Okay. So, what are the different types of rehabilitations that we can think of? Yes. So rehabilitation depends on what the individual wants, what a person wants. So let me like we discussed before. So if suppose somebody has a paralysis and he wants to overcome that. Correct. So that is one rehabilitation. It's called because it arises from a neurological problem. Most of the time कुछ stroke हो गया या spinal cord में injury हो गई, उसके बाद होता है. So when you have these kind of problems, so how to overcome that? That is neurological rehabilitation. Suppose somebody has shoulder pain, या हाथ पैर में दर्द हो गया, knee में meniscal tear हो गया, surgery हो गई, and how to then start walking after that, how to climb stairs, how to use a toilet, how to walk, how to run, whatever you want to. Suppose an athlete has it, so he wants to get back to working his sports. Absolutely. तो उसको कहते हैं sports rehabilitation या musculoskeletal rehabilitation, क्योंकि musculoskeletal problem से. Suppose किसी को कोई angioplasty हो गई, bypass हो गया, या कोई ट्रांसप्लांट हो गई, लंग की बीमारी हो गई, उसके साथ हमको कैसे स्टेप्स चढ़ना है, हमको कैसे काम पे जाना है, हमको कैसे फिटनेस रीगेन करनी है, ये हो गया. तो इसको कार्डियोवैस्कुलर रिहैबिलिटेशन कहते हैं. ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जिसमें फंक्शन अफेक्ट होता है. वी डोंट पे अटेंशन टू इट. फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, राइट. सो वी थिंक दैट ठीक है, चल फिर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन पेशेंट को हमेशा लगता है कि मैं टायर्ड हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं काम पे जा नहीं सकता, मैं वेट गेन हो गया है, राइट. एनीथिंग व्हिच यू थिंक इज नॉट एबल टू डू, व्हिच मेक्स यू नॉट एबल टू डू समथिंग व्हिच यू थिंक यू शुड बी डूइंग फॉर योर एज. ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई 90-year-old कोई ये करे, बट यस, a 50-year-old should be able to do most of the activities that he or she feels. Absolutely. So it depends on the patient's condition, it depends on what is expected from the patient, and depending upon what is the primary problem which is causing this. Rehabilitation कई तरह के होते हैं, कई systems के होते हैं. Rehabilitation का एक important fundamental ये होता है कि हम systems को नहीं देखते, हम पूरे patient को as a whole देखते हैं और improve करने की कोशिश करते हैं. Correct. Wonderful. So doctor, एक बहुत typical सा question है that कई बार क्या होता है, like you just said, cancer सर्जरी हुआ या कोई ट्रांसप्लांट का सर्जरी हुआ, etc. What we tend to do is we start taking care of ourselves at home on our own, right? But which I understand is not the right thing to do as well. Correct. So can you talk a little about this? Correct. So पहले ये होता था, this used to be what used to be practiced. Even now it's done in many centers. Okay. Patient की सर्जरी हो जाती है, patient को कहा जाता है कि घर पे जाइए, फिजियोथेरेपी करिए, and things will improve. It improves. I'm not saying it doesn't improve. It improves in a lot of patients. But now there is a lot of evidence coming in from the studies that we are doing in India as well as the studies which are done abroad by new techniques. इसको कहते हैं विंडो कहते हैं. विंडो का मतलब ये होता है कि एक टाइम लिमिट होता है जहाँ पे आप मैक्सिमम एक्टिविटीज को करेंगे, तो आपकी मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट होती है. ठीक है. और वो आपको इसलिए you have to start it initially and you have to do it at a high intensity. बहुत simple सा
एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर अपनी मसल बिल्ड करनी है तो 1 किलो का ये लेके कुछ बिल्ड करके कुछ नहीं होने वाला है. यू हैव टू डू इट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू डू इट पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट. तो सारी चीजें आपको एक साथ करनी पड़ती है. इसके साथ जो इनिशियल फेज होता है उसमें प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज भी होती है, आपको मेडिकल इश्यूज भी टैकल करना पड़ता है. तो हमारे पास एक्चुअली इन अपोलो हॉस्पिटल वी हैव अ होल सेटअप which takes care of the medical issues, which takes care of the problems which occur in the early phase and which use new techniques and new equipment. आजकल नए equipment available है हमारे यहाँ पे भी, जहाँ से पेशेंट जो बिल्कुल ही सोया पड़ा रहता है, बिल्कुल ही आईसीयू में रहता है, वो भी उठ के चलना शुरू कर देता है. Wow, that's fantastic. Correct. It happens on the very second day or third day when this happens. These kind of facilities are not available in. So you do this early and you will find कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो आपकी improvement अगर 50% होने वाली थी इन टेक्निक्स के साथ वो 70 हो सकती है, 80 हो सकती है, 90, 100. It varies from case to case basis. It is not for everybody. But this is the new way of doing things. और हमारे country में ये these are started in certain places and we are one of the places which offer all these kind of new services. Which is, I think, a fantastic thing and I think a great news for all of us. So I think, thank you so much, Doctor. I don't have any further questions because you've, in a very short span of time, you've actually spoken so much about rehabilitation. Benefits क्या होते हैं, करवाना क्यों चाहिए, कब करवाना चाहिए. You've actually answered all my questions which I had for you later on as well. So I think this entire conversation has been very, very helpful. So my only urge to all of you is, अगर आपको कभी डॉक्टर ने बोला rehabilitation के लिए जाना है, please do not start doing things on your own at home, right? Start trusting the system. It is important to go and visit a person जो established है, who has studied this entire topic at length and who has practiced this several times. Yes. Right? So we get a lot of second opinions and third opinions and fourth opinions. Okay. Unfortunately क्या होता है कि it comes after a lot, so much time, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद. We want you to please come to us, visit our facility, see our this, have a talk with us, and we'll offer you every kind of solution for every kind of problem, which requires our inputs to be correct. So I think सही वक्त पे अगर इलाज किया जाए, even if it is rehabilitation, सही वक्त पे होने से ही you will start seeing the entire result of it, positive result of it. Thank you so much, Doctor, for your time today. Really appreciate it. And thank you so much to all of our listeners. If you found this conversation helpful for you and for people around you, please go ahead, like, comment, and share it with all of your people in your circle of influence. Thank you for your time. Stay fit, stay healthy. Thank you.